We are extremely privileged to welcome Shri Pushkar Singh Dhami ji, the Chief Minister of Uttarakhand, as our chief guest. Thank you, sir, for giving us your precious time. Shri Guru Charan Ratoham, Bhairavoham, Shivoham. It's our tradition at the Himalayan Institute to start an event with homage to Swami Ram, the cosmic force behind whatever you see in this medical haven. Let's give a musical tribute to His Holiness. I request the nursing students and staff, Mr. Jayant of our university, to present the Guru Vandana.
flowers and memento are a way of expressing our gratitude towards our guests and dignitaries who have spared time for us. We have with us the youngest and the extremely talented Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, doing a commendable job in the development of the state. May I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Vijay Dasmana ji, to present a bouquet, shawl and memento to our chief guest, Dr. Deepshika and Rohan, to please facilitate the process. Thank you, sir. We also have with us Dr. V.K. Paul, who is globally recognized medical scientist and a public health exponent. May I request our Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Vijendra Chauhan, sir, to present a bouquet, shawl and memento to our guest of honor, Dr. Paul, the prestigious member of Niti Aayog. Dr. Divya and Dr. Akeet to please facilitate. Thank you, sir. We are fortunate to have amongst us Professor Vijendra Chauhan, sir, who is not just an ultra-dynamic orthopedic surgeon and a trusted academician, but also a person with great morals and a soul full of love. Linked to the roots of this institute since its inception, Dr. Chauhan is member presidential body and the Pro-Vice Chancellor of Swami Ram Himalayan University. He is a well-known medical educationist and loves to conduct regular workshops on mind, body and spirit. I request Dr. Chauhan to kindly shower the hall with welcome flowers. Shri Pushkar ji, Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Professor Dr. Vinod Paul, Honorable Member of Niti Aayog, distinguished dignitaries on the dais, off the dais, I pray to the divinity within you all. It's indeed a great honor for me to welcome you all to this beautiful campus whose foundations have been laid by a great saint, His Holiness Dr. Swami Ram, a world-renowned yogi, scientist, humanitarian, and a philosopher. Friends, what started with an OPD in a tin shed has bloomed into a beautiful medical township and a full-fledged university. It's all to the vision of our beloved Gurudev. My salutations to him. Friends, we all are privileged that this temple of compassion and love has been blessed today by Shri Pushkar Singh Dhami, Honorable Chief Minister of Uttarakhand and Chief Guest of this function. On behalf of Swami Rama Himalayan University family, I welcome you, sir. We are also honored today to have amidst us Professor Dr. Vinod Paul, member of Niti Aayog, as our guest of honor for this function. Dr. Paul is a globally recognized medical scientist and a public health exponent who made an impact in the lives of common man through his initiatives such as Ayushman Bharat and Poshan Abhiyan. Sir, I welcome you. It's indeed a great honor for me to welcome our young dynamic Vice Chancellor, Dr. Vijay Dasmana, a man who is carrying forward the legacy of love, serve, and remember of our beloved Gurudev in its true spirit. Friends, this conference would not have seen the day without his able guidance. At every step,
he used to infuse fresh energies in all of us when our sales were down. Sir, I welcome you. I'd also like to welcome Dr. Ashok Devrari, a well-known international famed neurologist and principal of our medical college, Himalayan Institute of Medical Sciences, for gracing this occasion. Dr. Anshu, President Academy of Health Professions Educators, comes from my alma mater, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. Madam, you have brought Sevagram here today. I am very privileged and honored by your gracious presence. I welcome you. Dr. Siraj, Secretary Academy of Health Professions Educator, is an old friend of mine from Mahé. Sir, we are honored by your gracious presence today. Friends, faculty is the soul and of any good academic program. We are privileged today to have learned faculty members who have made an impact on the medical education in the country, like Professor Dr. Ved Prakash Mishra, who's sitting there in the first row, Dr. Ram Narayan, Dr. Vivek Saoji, Dr. Krishna Seshdari, Dr. P. Vijay Raghavan, Dr. Avinash Supe, Dr. Tejendra Singh, Dr. Thomas V. Charko, Dr. Dinesh Badial, and many others who are present in this August gathering. Dr. Tejendra Singh and Dr. Dinesh Badial, friends, they are my mentors too. I am thankful to all of you for sparing your valuable time out of your hectic schedules, and you are here to educate all of us. Since the last few years, friends, medical education in our country is undergoing a tremendous transformation. Keeping this in view, the theme of the 13th National Conference on Health Profession Education has aptly been chosen as preserving the human connect in an era of technological advancements in medicine. We have left no stone unturned to enrich this event with a robust, utilitarian, scientific academic content to address the theme of the conference. We had 24 workshops, inclusive of workshops on science of joyful living and transforming healthcare professionals into self-aware human practitioners. The main conference will consist of several keynote addresses by renowned medical educationists on medical humanities, next generation undergraduate education, strengthening and assessing professionalism, creating safe learning environment, artificial intelligence, and skill training. These are some of the topics I'm sure would stimulate all of us. Teachers and students will have ample of opportunities here today to present and share the scientific and academic work. I'm sure the moment you all landed in the campus, you would have felt the divinity of Devbhoomi and His Holiness. Alongside the academic activities, please include in your itinerary time to explore the flora and fauna of this beautiful region. The beautiful temples of Haridwar, Rishikesh, and the Ganga Aarti on the bank of holy Ganges, I'm sure would lead you into ecstasy. Once again, I welcome you all with a beautiful prayer from Vedas. Om Senavtu, Senav Bhunaktu, Saviryam Karvavahi, Tejasvinadhitamastu, Ma Vidishavahi. Meaning thereby, O Supreme Brahman, may we learn together, may we progress together, may we eat together, and may our combined energies be rich in gaining knowledge, and may we be never jealous of each other. Thank you very much. Once again, I welcome you. Thank you, sir. Dr. Anshu has served as faculty member and resource person at all 4 Indian FAMER regional institutes. She is a global faculty for the FAMER Institute at Philadelphia. Dr. Anshu has many awards to her credit: the Commonwealth Academic Staff Fellowship, CMCL FAMER Fellowship, FAMER Institute Fellowship from Philadelphia, International Fellowship in Medical Education, MHPE from Maastricht University distinction. I would now request Dr. Anshu, President of AHPE Executive Committee, to address us all with her valuable words. Dr. Anshu. Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami ji,
Honorable Guest of Honor, Dr. Vinod Paul, Member Niti Aayog, Honorable Vice Chancellor, SRHU, Dr. Vijay Dasmana, Respected Dean, HIMS, Dr. Ashok Dev Rali, Pro Vice Chancellor and Organizing Chairperson, Dr. Vijendra Chauhan, Secretary AHP, Dr. A.M. Siraj, Organizing Secretary, Dr. Juhi Kalra. In the audience, distinguished guests, Dr. Ved Prakash Mishra, my mentors in the field of medical education, esteemed delegates, faculty and students, good afternoon. It is indeed a matter of privilege and pride to be given this huge responsibility of being the President of the Academy of Health Professions Educators for the year 2022. Medical education today is at the crossroads, and this is because the competency-based medical education is a relatively new concept which has been thrust upon us, and added to that, because of the COVID pandemic, we've had to deal with the pressures of online teaching. As luck would have it, the teachers themselves, the faculty themselves, have had no experience in both these things. So because of this journey is going to be a turbulent one, it's going to be a bumpy one, and the part that the Academy of Health Professions Educators is going to play here is to provide scaffolding. We are here to support the faculty in learning all the new concepts. After I finish, Dr. Siraj, our secretary, will give you a detailed report of all the things that the AHP has been doing. One of the things which began with the AHP is that in 2007, the National Conference of Health Professions Education started. And today it's a matter of pride to see that it's 15 years since the NCHP started. And this is the 13th conference. So this conference has become a meeting ground, not just for the medical faculty, but for faculty of all health professions education. And through this, we have been able to build a community of practice where everybody is free to come here and share their concerns and find their answers. The AHP would like to work with the regulatory bodies. We would like to present diverse viewpoints. Just like a Samudra Manthan was needed to produce Amrit, I strongly believe that academic debates and discussions are important and necessary, and they're a sign of a healthy and growing society. Another heartening fact is that the number of medical colleges across the country are increasing. But what must not be forgotten is, and should be foremost on our minds, is quality. While the number of colleges are increasing, we cannot ignore we cannot stop thinking about the quality of teaching, learning, and assessment. I strongly believe that quality cannot be achieved with minimal faculty. There are no shortcuts in the pathway to quality, and the quest for excellence demands adequate transparency, delegation of work, accountability, supervision, the monitoring, as well as lots of integrity. So I hope we are all going there. We might not have reached the best possible place, but every little step counts. And lastly, I would like to congratulate the Himalayan Institute of Medical Sciences, the organizing chairperson, Dr. Chauhan, Dr. Juhi, and the entire organizing team for hosting such a beautiful conference. We have been savoring all your warm hospitality here, and I'm sure that the academic deliberations will prove useful to all of you who are present here. Thank you very much. Thank you, ma'am. The next dignitary to honor us with his words is a fellow and faculty of the International Famer Institute, Philadelphia. He is a recipient of the American Society for Microbiology Early Career Award, Honorable Mention Award, UNESCO Award for International Educators, and Outstanding Mentor Award. He has authored articles and chapters in medical education for the innovative student-centered pedagogic approaches in medical education. He was awarded the Good Teacher Award 8 times by the university. Dr. Siraj Muhammad Ali, the Secretary of AHPE Executive Committee, please enlighten us with his words of wisdom. Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhanji, Honorable Member of the Niti Aayog, Professor V.K. Paul,
respected Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor, Dean of the Medical School, President of AHP, Dr. Anshu, members of the Executive Committee of AHP and other members of the Academy, other distinguished guests, Professor Vipin Mishra, and my teachers and mentors in medical education who are here, and medical educators who have joined from various destinations this country. Cordial greetings from the Academy of Health Professions Educators, India. Being at the inaugural session of the 13th National Conference for Health Professions Education, organized by Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Ram Himalayan University at Dehradun. As the Secretary of Academy of Health Professions Educators, it's my privilege to give a brief summary of the activities that the Academy is involved with. AHP primarily caters to the professional development of health professions faculty by organizing faculty development programs that focus on various domains of teaching, learning, assessment, academic leadership, and scholarship. During the COVID pandemic, we shouldered the responsibility of creating awareness and providing necessary knowledge and skills for medical faculty to deal with the necessities by organizing around 15 webinars that focused on online teaching, online platforms, and processes involved with online delivery of the curriculum, learner engagement, and assessment modalities online. The monthly AHP webinars are also focused on leadership, scholarship, and quality management of health professions education. As implementing CBME is now a national priority, the ongoing sessions now largely focus on various aspects of CBME and its implementation. The current membership of the Academy tallied to 415, with affiliates representing all Indian states and international members from South and Middle Eastern countries. It is encouraging to notice that in addition to faculty from the medical schools, members from other health professions are also on steady rise. They represent dentistry, nursing, allied health professions including physiotherapy, optometry, medical lab technology, to name a few, along with the streams of alternative medicine. Looking to the future, AHP plans to expand its evidence base in Indian context through the explicitly established special interest groups that deal with professionalism, faculty development, interprofessional education, and health humanities. This morning we heard Krishna Sheshadri lamenting about having no national initiatives for actually forming curriculum in our own context. I believe that Academy with its expertise can actually shoulder this responsibility to roll out curriculum in these most important areas. Academy is also considering the production of its own journal. However, to begin with, the repository of useful resources for health professions educators and AHP guides, similar to the AME guides, that focus on high priority areas of faculty interest will soon be developed. Academy also plans to strengthen its network and widen its reach by collaborating with national and international partners, which will help our members in fostering their professional development and strengthening the tenets of academic leadership and scholarship. On behalf of the Academy, I would request the faculty who have not yet joined the Academy to join, and for those who are already members, to strengthen the Academy by participating in our activities and further the cause of health professions education in this country, which ultimately must reflect in enhanced quality of medical education, thereby leading to superior health outcomes. Jai Hind. Thank you, sir. We have with us a person of magnanimous potentials under whose leadership our institute has implemented several projects that have benefited over 2.2 lakh women and children through maternal and child health programs, provided outreach health services to 1.5 lakh people, including 10,000 during COVID, helped over 2 lakh children, 3 lakh eligible couples via school, adolescent health initiatives, and much more. In 1996, when Swami Ram left his body for the heavenly abode, he transmitted his brilliance into some who would continue the saga against darkness of ignorance and the sufferings of disease. We have seen our Honorable Vice Chancellor, sir, steering the institute through good and tough times with equal dexterity. Dr. Vijay Dasmana, sir, a charming personality himself, is of infinite potentials. May I request you, sir, to please enlighten the gathering with the words of your invaluable experience. आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए
अपने हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सम्मानित डॉक्टर विनोद पॉल जी, dignitaries on the dais, off the dais, delegates, participants, इस मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के छात्र छात्रा, आप सबका गुरुदेव स्वामी राम जी की इस नगरी में हार्दिक अभिनंदन। जहां जहां गुरुदेव ने अपने प्रकल्प शुरू किए, विदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, एक थीम, एक वाक्य, एक सूत्र, एक प्राण जिनकी वजह से संस्थान चल रहे हैं, वो सूत्र योगः कर्मसु कौशलम। अपना काम कुशलतापूर्वक करें, यही योग है। और हम सब यहाँ पे कर्मयोगी बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि किसी और चीजों में पढ़ना चाहिए। अगर हम अपना काम कुशलतापूर्वक करते हैं तो बहुत बड़ी एक सेवा इस राष्ट्र की होगी। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, नर्सिंग के हों, पैरामेडिक्स के हों। उनके ऊपर हम कुशलता से उनको पढ़ा सकें, उनको सिखा सकें। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके हम लोग अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी विषय पे ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आयोजित की है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आज हम लोगों ने अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी शुभारंभ किया है, क्योंकि अगर हम अपना काम जहां पर जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो जिस क्षेत्र में हैं, अगर हम अपना काम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, मैं समझता हूं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। Thank you very much, sir. Today's guest of honor, member of Niti Aayog, is credited for conceptualizing the Ayushman Bharat program, the largest health assurance program of the Government of India. He has also contributed to formulating the Poshan Abhiyan, the Government of India's overarching. सब चाहते नहीं है कि मैं कुछ बोलूं उनके बारे में. To improve the nutritional outcome for children, pregnant women and lactating mothers. Dr. Paul, Dr. V.K. Paul. Namaskar. Good afternoon. Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shriman Pushkar Singh Dhami ji, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, and Dean of this great institution, a great temple of learning and service, distinguished leadership of APHE, present here, Anshuji, Siraji, distinguished leader of medical education in the country, seated in the first 2 rows in particular, distinguished faculty of the institute, this university, students, friends. I'm truly indebted, grateful and blessed to be amongst you on this auspicious day. And my deep salutations to His Holiness Swami Ram, who has made us possible to assemble in a temple of love, in a temple of service, a temple of holiness, divinity. It's really too much of a fortune for all of us. I'm very impressed with the activities of the university, in particular in the sphere of medical and professional education. The quality of services is well known. I'm conscious of the fact that under PMJ
you very often are outperforming almost all the hospitals in the region. You have specialty-driven care, evidence-based care, and truly, the vision of His Holiness Swamiji is being taken forward by the leadership of the university. And in this, having Professor Ashok Devari, my very dear brother, colleague, who has joined here as Dean recently, you have a great asset. You bring in great energy and great push and great humanitarian approach to education and care in this institution. And I request the Honorable Chief Minister to also use his talent in the sphere of maternal and child health for the larger cause of healthcare of the state. The 13th National Conference on Health Professional Education, NCHPE 2020, is a proud moment, series of meetings maturing into the 30th event. It's creditable. Many noble causes, many noble movements don't get sustained. I'm very happy that this moment is sustained. This has a vigor, this has rigor, and this has the connect with the best developments and best practices and the best thinking, the global thinking that you all bring to this discourse in the country. As Dr. Anshu, you very correctly said, yes, we are at an interesting phase in medical education. We have a wonderful competency-based curriculum for undergraduates. I'm so proud of that development. And the opportunity as chairperson of the BOG to take forward the work done by stalwarts of medical education. It's a game-changing development. But to deliver it in the true spirit is a challenge. But we must take up that challenge. That's how development happens. It's very easy to stay put where we want to be. We are. Business as usual is the easiest thing to do. But we are shaping the minds and the brain and the heart of tomorrow's doctors. And they have to fit into the new regime, new context, new India. And that would require making changes in the curriculum at the least, and to deliver it effectively across this nation. So the efforts in that regard are truly laudable. But I may also say that we are passing through a stage of great changes in medical education, which again is a special moment in the history of India. There is a very rapid expansion of the medical education system under the leadership of the Honorable Prime Minister Modi. From about 387 medical colleges, we are 610 on. There is a commitment to take forward the further development of new medical colleges to meet the unmet need of both care and professional capacity to another close to 100 medical colleges very soon. It's a commitment by the government already. And this is unprecedented. This is unprecedented. It's unprecedented in sheer volume. It's unprecedented in terms of the MBBS seats that the Honorable Prime Minister has succeeded in creating. From 52,000 seats in 2014, today we have 97,000 and perhaps we already be 1 lakh seats. Double in 8 years. It's remarkable. It's historic. Postgraduate seats have already doubled and they've gone beyond double. We are energizing the National Board of Examination system to fulfill the requirements of the postgraduate specialists because the scarcity of specialists is much more acute than general doctors. We are already at 1 per 1,000 doctors, which is just a modest benchmark of the WHO. And we'll go beyond this by 2030 to close to 1.5 or even more, perhaps 2. But the specialist asymmetry is 20/80. Here we need 5, we have 2. We have 1. And this has to be met. And for some specialties, the pipeline is so weak that at the current rate, it will take 30 years, 35, 60 years to
to reach the median benchmarks that are globally needed. I want you to think about how to accelerate this. Specialists, today is the time to plan for optimum availability of specialists in all spheres. India citizens want specialist care. PMJ commits for specialist care. The government of Uttarakhand has ensured PMJ not only for the two quintiles, lower two quintiles, but for universities. These are the aspirations. And the political leadership has risen to the occasion. But they challenge us to create an ecosystem to have specialists. They challenge us to create an ecosystem where teachers can be provided to man these institutions and to ensure, of course, appropriate skills as well as distribution. So this is the expectation. The medical education leadership has to rise to the occasion. Think about ways and means of how this whole process can be accelerated. I just now said that in some specialties, I don't want to name, or let me name, obstetrics will take 35 years to come to the global media, and we want to be the most developed nation by 2047. We cannot be resting on minuscule standards of other nations. The times have changed. So let's rise to the occasion. Think particularly about solutions toward specialist education as well as you move forward, because we need numbers, we need quality. And in that context, today's inauguration by the Honorable Chief Minister of a great skill center, the best skill center that I've ever seen, is a great event for this university. I congratulate you, Vice Chancellor Sahab. Congratulate the entire fraternity here. Beautiful. It is masterful. There are other changes in medical education sphere. In the presence of the Honorable Chief Minister, I take the opportunity to enlist them, sir. The advent of the National Medical Commission, a new regulatory regime is historic. And this is taking our nation forward in better regulation and more comprehensive, more effective role of the government and the stakeholders in taking forward medical education. We are also looking forward to starting the district residency program. Sir, in that program, in the second year, all postgraduate students, 55,000 of them today, maybe 85,000 2 years, 3 years from now, will be posted at district hospitals for 3 months each. So you have a workforce for the nation of 55,000 students rotating, which means every district at the saturation point will have 5 to 8 to 10 specialist residents in each district hospital. Please prepare yourself for that, and leadership think about how to do it the best way. I want to emphasize 2 more points here. One, in MBBS education, there is a flaw, a fundamental flaw. The flaw relates to the fact that our training has been on acute illnesses and communicable diseases. And the timings are such that students don't get an opportunity to see the course of the disease. So I see diarrhea patient, tomorrow becomes okay, done. But hypertension and diabetes don't lend us to that kind of a decision making and training. So you need to follow up. If the first drug fails, what do you do? If I don't conform to better sugar control, because of, what do you do next? I want to bring in a lexicon in our discussion, namely continuity of care, not continuous. Student must learn to follow up, because chronic diseases or lifelong diseases or long diseases, if they don't see the course of the disease over a period of time, when will they make decision to start the third trial? And so on. And mental health. Acute care, fine, but what about future? And so on and so forth. So I bring your concern to continuity of care, and I also would plead with you to bring back the discipline with vigor of the family medicine. It is a pity that in the NMC system, only 3 or 4 medical colleges, private, public, all included, are running a family medicine program. What is wrong? When I talk to stakeholders, they tell me family medicine must be very important. We need a general practitioner. We need a doctor on whom I can, the shoulder of whom I can cry. Why there is no demand in the private sector? Why there is no demand in the government sector? The government sector demand we have corrected by ensuring that the IPHS standards have a family medicine specialist provision at CSC, as well as at the district hospital
amounting to 7,500 such positions. But can we look at why private sector is not demanding this? As leaders, we should change that. But then at the same time, please strengthen the pipeline for family medicine. India is missing a great opportunity in care. Please speak up for family medicine. At NITI Aayog, with the Ministry of Health and Family Welfare, we are making an effort to initiate an innovative family medicine curriculum program, training program in the AMS system, which has the flexibility, and I hope you'll be hearing more about this. Honorable Sir, in the end, I wish to very briefly touch upon the great developments in the health sector that are unfolding in this beautiful state. I am from Himachal, sir. I relate to Uttarakhand in particular. Very proud that we are close to the SDG goal achievement for child health. We will achieve the NMR SDG goal as well. And these are great developments. I had an opportunity to see the Health and Wellness Center and Primary Health Center, great delight with wonderful people and teams. Sir, we have a problem of anemia. Almost half the individuals are anemic. We have a problem of hypertension, 23%, and diabetes. So we like to work with your teams to make sure that these challenges, difficult challenges, are also addressed optimally under your leadership. With these words, my deep gratitude and my salutation to the effort and best wishes for the conference. Jai Hind. Thank you, sir. A postgraduate from the Lucknow University, an active leader of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षित स्वयंसेवक. He also served as the state president of the Bharatiya Janata Yuva Morcha until 2008. During this time, he was credited with asserting the state government to reserve 70% of opportunities for the local youth in industries of the state. His motto, सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य, अंत्योदय उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए हर उत्तराखंडी को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और उत्तराखंड बने सिरमौर, देवभूमि उत्तराखंड भारतवर्ष के विकास के समस्त मानकों के आधार पर नंबर 1 राज्य बने. And he is targeting to make Uttarakhand a drug-free state by 2025. हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज कुछ समय निकालकर यहाँ पधारे हैं. मैं डॉक्टर ज्योति आपका अभिनंदन करती हूँ. आपके वचनामृत के लिए हम लालायत हैं. Today we have an opportunity to hear your thoughts and this will surely be going to encourage us in our future events. Pushkar Singh Dhami ji, sir. भारत माता की जय. सब ज्ञानी लोगों के इसमें व्याख्यान सुन के मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग जो है सुस्त हो गए. क्यों बोलना? चिकित्सा शिक्षा पर आयोजित इस 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, नीति आयोग के सदस्य और हमारे पड़ोसी राज्य के मूल निवासी और जिन्होंने बहुत सारगर्भित, बहुत सरल तरीके से बहुत सारी बातें हम सबके सामने रखी. जिस प्रकार से भारत की सरकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में. डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना जी, और जब धस्माना जी ने काम संभाला था बहुत छोटी आई थी, 26 साल के थे, तब से लगातार ऐसे विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, जो समर्पण भाव है, उसके कारण से आज हम देखते हैं कि ये विश्वविद्यालय इस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है.
डॉक्टर विजय दसमाना जी, कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक देवराली जी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु जी, सचिव डॉक्टर सिराज मोहम्मद अली जी, NCPHE के सचिव डॉक्टर जी कावरा जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण देश भर से आए हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा के विद्वान, हमारे सभी प्रोफेसर, डॉक्टर और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं विश्वविद्यालय में आया, वहीं जो देश विदेश से बहुत सारे हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कौशल और अनुरूपण उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, और सच में जो अभी धसमाना जी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ, वो वास्तव में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को, हमारे कामों को बहुत आसान बना देती है। और हमने देखा अभी जिस प्रकार से सारे लैब के अंदर जाकर, जहाँ पर हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे MBBS वाले, MD वाले, MS वाले सब जो ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने उनके लिए एक आसान रास्ता बना दिया। एक उनके आगे भविष्य में चिकित्सा के लिए एक बहुत ही शानदार रास्ता बना दिया। पूरी तरह से उनको स्किल करने का काम यहाँ पर किया। उसका लोकार्पण के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं युवा साथियों के बीच में, और जब भी कोई विश्वविद्यालय का कार्यक्रम होता है, किसी विद्यालय का कार्यक्रम होता है, कोई छात्रों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है या विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, तो मैं अत्यधिक व्यस्तता के बाद मैं अगर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसी को देता हूँ तो ऐसे कार्यक्रमों को देता हूँ, इसमें आना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो अभी क्योंकि आज का कार्यक्रम भी मेरा, क्योंकि यहाँ से पॉल साहब हैं, वहाँ चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में मेरी भी तो ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, तो लगातार मेरा वहाँ आना जाना है। लेकिन मैंने आज वहाँ थोड़ा उनसे अनुमति मांगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही दसमाना जी को कहा था मैं जरूर इस कार्यक्रम में आऊँगा, तो आप सबके बीच में पहुँचा। और यहाँ पहुँचकर सच में सभी हमारे विद्वानों ने जितने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए, आपके विचारों से एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भी आ गई, और मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद और तेजी से, और ऊर्जा से, और उत्साह से, और उमंग से मैं भी काम करूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं, सबसे अंदर खुशी है। इस अवसर पर मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक परम गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी राम जी को नमन करता हूँ। स्वामी राम जी को नमन करता हूँ कि जिनकी तपस्या के कारण से, जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर एक शानदार ये परिसर बन गया है। और जैसा अभी धसमाना जी कह रहे थे मुझे बातों में कि हम तमाम जगह के दूर विश्वविद्यालय के, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेजों के जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ इनको भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी, दार्शनिक, शिक्षक एवं श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके
इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की और वास्तव में ये नाम ही अपने आप में पूरे हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है या हिमालयन राज्यों की जो बात है उसको भी सामने रखता है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग की जब बैठक हुई तो उस बैठक में मैंने हिमालयन राज्यों की बात करी थी वहाँ पर कि होता क्या है कि इस जैसे राज्य है हमारा, तो पूरे राज्य की जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000, लेकिन पूरे साल भर हमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से करनी पड़ती है। कम से कम 6 करोड़ लोग पूरे साल भर देश भर से आवागमन यहाँ करते हैं। तो डॉक्टर पॉल साहब, हमको जो है जो आपकी तरफ से जो हमारा शहर है वो 1,25,00,000 का नहीं है, बल्कि हमारा जो है 7 करोड़ से ऊपर का है। तो उस पर मैं हमेशा से बात करता रहा अभी, क्योंकि आप सामने दिखे और हिमालयन इंस्टीट्यूट के नाम से मुझे सब याद आ गया था और मैंने वहां भी रखी थी ये बात, आपको शायद ध्यान होगा, जहां स्वामी राम जी का दृढ़ मत था कि मानव शरीर भगवान का मंदिर है और अपने साथी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा करना ही ये प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। उनकी प्रेरणा से आज संस्था उत्तराखंड व देश में पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं और आगे भी करते रहेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। वैसे तो अस्पताल में आना किसी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा खराब होता है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अस्पताल में कई महीनों रहकर एक बार अपनी छोटी बहन का मैंने इलाज करवाया, अंततः उसका देहांत हो गया बाद में। फिर करीब 4-4.5 महीने में अपने पिताजी के साथ में रहा अस्पताल में। तो मैंने तब देखा कि जो पेशेंट होता है वो तो लेता ही होता है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं जिनको तीमारदार बोलते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, मानसिक स्थिति भी बड़ी खराब होती है। और छोटी छोटी बातों में अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा बता दिया कि आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो वो पेशेंट को तो वो अपनी स्थिति में होता है, लेकिन जो साथ में होता है वो भी पेशेंट से जुड़ जाता है। पता नहीं आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, उसको थोड़ा सा भी दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि खुद को दर्द हो रहा है। तो ये मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि अस्पताल आने का किसी को मतलब किसी को भी भगवान जो है अस्पताल न दे, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिसर में आकर आप तो आपने बुलाया, उसे हम बीच में कुछ लोगों को देखने भी आ गए थे, जिसमें आप थे नहीं। तो यहाँ पर आकर अत्यंत ही हर्ष का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। इस परिसर के अंदर हरियाली है, साफ सफाई है, अच्छा एक यहाँ का परिवेश है, उसको देखकर हमेशा लगता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप इस विश्वविद्यालय का परिसर स्वच्छ है, हरा भरा है, इसका वातावरण शांत है और एक अलग सी फीलिंग यहाँ आकर है। और मैं समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव की सुगंध इस पूरे परिसर में फैली है। इसके कारण से आज ये हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत लोग आते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका इलाज कहाँ चला, आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसको चलाया है, उसके रोगियों को भी, उसके लाभार्थियों को भी बहुत मतलब मैं कहूँ कि अच्छे प्रकार से यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हमारी सरकार भी चिकित्सा सुविधाओं के सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पर जहाँ आज हिमालयन इंस्टीट्यूट हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर, वहीं इसके बगल में एम्स भी खुल गया। वहाँ भी हजारों लोगों की ओपीडी होती है। और इस राज्य के लिए एक एम्स यहाँ खुला हुआ है, एक एम्स उधम सिंह नगर में भी स्वीकृत हो गया है, वो अभी जल्दी ही उसकी भी बिल्डिंग बन जाएगी। इसके साथ साथ इसी जिले के बगल वाले जिले में हरिद्वार में, वहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में। उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज हमारा वह भी चालू होने वाला है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इस राज्य में जो हमारे हिमालयन राज्य है, हिमालयन राज्यों में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो जहां चिकित्सा बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दूर दूर गांव हैं, पगडंडियां हैं, हर जगह पर उस प्रकार की सुविधा आना अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे उसको बनाया जा रहा है। जहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में चुनौती, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौती है। और हमने इन दोनों ही क्षेत्रों में संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दोनों को सुदृढ़ करेंगे, दोनों को अच्छा बनाएंगे, सबके लिए सरल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे, सबको ये चिकित्सा और शिक्षा दोनों मिले, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमने राज्य में अभी निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को करने की निःशुल्क व्यवस्था की है। आज प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में कोरोना महामारी के समय में भी ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए गए हैं, आईसीयू बेड बनाए गए हैं, आईसीयू बनाए गए हैं। और जब महामारी आई थी उस समय में यहाँ हमारे यहाँ पर मैं कहूँ कि पूरे देश की ये स्थिति होगी पॉल साहब कि ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, सिलेंडर बहुत कम थे, ऑक्सीजन के हमारे कंसंट्रेटर बहुत कम थे, मास्क नहीं थे, उस समय में पीपीपी किट भी यहाँ नहीं बनती थी, बहुत परेशानी भी शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे उसी दौरान एकदम से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, जहाँ देश के अंदर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये सैकड़ों गुना नहीं हजारों गुना हो रहा। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी और WHO भी ये सोच रहा था कि महामारी जब भारत के अंदर आएगी तो भारत का बुरा हाल हो जाएगा, भारत कैसे इससे संभल पाएगा, कैसे व्यवस्थित हो पाएगा। जहाँ क्योंकि हमारे यहाँ तो एक छोटे से संस्कार, अगर मैं कहूँ नामकरण संस्कार, उसमें भी सैकड़ों लोग, 100-200 लोग आना सामान्य घटना है। जन्मदिन की पार्टी होगी तो उसमें भी 100-200 लोग आएंगे। शाम को कोई और जो संस्कार होते हैं, कोई गोद भराई है, कहीं पर जो है हमारा टीका है, कहीं पर अलग जो छोटे छोटे संस्कार, उसको प्री वेडिंग बोलते हैं, उसमें भी सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसे समय में कैसे व्यवस्थित होगा? तो ऐसा ये समय बड़ा चुनौती वाला था हमारे सबके सामने। मैं कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, जहाँ हमने इस कठिन चुनौती के दौर में भी अपने को व्यवस्थित किया, वहीं आप सब जैसे विद्वानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर ही एक नहीं 2 जो स्वदेशी वैक्सीन थी वह भी बनाने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने और सरकार ने किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं, जो हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हमेशा से अयम निजम परोगेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसुदैवम तो कुटुंबकम, कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बात वह लोग करते हैं जिनके चरित्र और चित्त बहुत छोटे होते हैं, जिनके चित्त बड़े होते हैं, लेकिन जिनका मन बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है,
उनके लिए तो पूरा संसार अपने घर के समान है, अपना घर है। तो ऐसे समय में जब दुनिया जूझ रही थी तो भारत की सरकार ने वैक्सीन बनाई, भारत के लोगों को एक डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज भी लगाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। यह भारत की संस्कृति है, कठिन समय में भी दूसरे लोगों को मदद करना, जो हमारे संस्कारों में रहा है। हमेशा से हम कहते हैं कि सारा संसार हमारा घर है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड आयुष्मान योजना हमारे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने उसको आच्छादित किया है। इसमें 42,90,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड उत्तराखंड के अंदर अभी तक बन चुके हैं। आपको ये जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता होगी कि 5,83,000 से अधिक मरीजों ने अभी तक मुफ्त में इस योजना से अपना उपचार करा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 1,020 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है राज्य के अंदर। हमने कोविड महामारी के दौरान भी कोशिश करी, क्योंकि बड़ा कठिन समय हो गया था यहाँ पर, कुछ चल नहीं पा रहा था। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यावरण मित्र सभी को हमने अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी। यह भी आप सबको जानकर हर्ष होगा कि हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से उत्तराखंड रक्तदान में भी देश भर में भी दूसरे स्थान पर रहा। और आज ही प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने छात्रों को सही ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सज्जित करना होगा। यह आज के समय की भी मांग है। और कोविड महामारी ने भी हमको यह सिखाया है कि हमको हर समय, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। और इसने हमें सिखाया कि मेडिकल कॉलेज जो जिलों और उप जिलों के केंद्रों के रूप में काम करते हैं, उनको नियमित शिक्षण के साथ साथ ई शिक्षण, ई एजुकेशन, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए तथा ई मॉड्यूल और टेलीमेडिसिन से कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन से भी पूरी तरह से सुसज्जित रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम हर प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट बने और भविष्य की जो भी समस्याएं हैं उनका हम सफलतापूर्वक सामना कर पाएं। आज के हमारे मेडिकल छात्र ही भविष्य के भारत में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करेंगे, इसलिए उनकी स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। जैसे अच्छी स्किल होगी तो हर कोई उनके पास जाएगा। ये ऐसे ही हो जाता है कई बार, बहुत अगर नजदीकी डॉक्टर है, अच्छा इलाज अगर नहीं करता है, हमारा बहुत करीबी भी होगा तो हम उसके पास जाएंगे नहीं। और साहब सिफारिश करने में जब कई बार ऐसा होता है कि सिफारिश करते हैं लोग, तो हम कहते हैं उससे कि जो है भाई गाड़ी में आप कौन सा वाला ड्राइवर पसंद करेंगे, जो अच्छी गाड़ी चलाता है, लंबा जिसको अनुभव है, या जिसने नई नई गाड़ी सीखी और आधी अधूरी सीखी है। तो इसलिए ऐसे समय में जो हमारे विद्वान लोग हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षक हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो अच्छे स्टूडेंट को नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो हमारी सीरीज चलती है वो सीरीज कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी, एक चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हमको बहुत सजग होकर और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि जागरूक होकर पूरी संवेदनशीलता के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें रोगियों के कल्याण के लिए भी चिकित्सा शिक्षा से जुड़े छात्रों के कौशल और उनके व्यवहार को, जो हम लोग हमेशा से ये कहते आए और देखा भी है, आप लोग भी कभी जब छोटे होंगे तो मैं तो अपनी सुई लगाने से भी बड़ा डरता था। डॉक्टर ने बड़ा समझाया मुझे, एक बार बुखार हो गया बचपन में, उन्होंने कहा कि सुई लगाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैंने सुई लगाना जो है, तब मैं उनकी बात मान गया
और सुई लगी तो मैं ठीक भी हो गया। तो फिर भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं महसूस की। अगर डॉक्टर अच्छे से कह देगा शुरू में कि बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवहार कर दिया, ये कर दिया, तो आधी चीजें तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। मतलब अच्छा संवाद, अच्छा कम्युनिकेशन, और घर चला जाएगा और उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तो तुम 5 दिन बाद आना, तब तुम्हारा जो है एक्सरा करेंगे, तुम्हारे पेट में क्या है, पत्थर तो नहीं है, पेट में कोई थोड़ा तो नहीं है। तो पता चला वो 5 दिन बाद जब एक्सरा करवाने या अल्ट्रासाउंड करवाने आएगा, 5 दिन तो उसको नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं क्या क्या सोचेगा, कितने विचार आएंगे उसके लिए। तो डॉक्टर को जहाँ अच्छा चिकित्सक तो डॉक्टर होता ही है, उसके साथ साथ उसको अच्छी साइकोलॉजी वाला भी होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं न कहीं अच्छी साइकोलॉजी होना भी बहुत जरूरी है। मेरा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से भी मेरा आग्रह रहता है कि चिकित्सा शिक्षा, ई लर्निंग और सिमुलेशन लैब के लिए मजबूत मॉड्यूल विकसित करने हेतु हमारा आपस में भी कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। मैं पिछले दिनों एम्स गया था, तो वहाँ भी मैंने उनसे डॉक्टर मीनू सिंह जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने कहा था, उनसे आग्रह किया था कि आप हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं या उनकी फैकल्टी है, उनसे भी कहीं न कहीं आपस में समन्वय करें, उनसे भी कहीं न कहीं बात करें, जिससे कि कुछ नई टेक्नोलॉजियाँ जो लगातार आप लोगों के अनुसंधान होते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है, और कुछ लोगों को पहले पता लग जाती है, कुछ लोग ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा एडवांस हैं उनको दूसरे लोगों को भी कहीं न कहीं उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपको इस दिशा में हर संभव जो भी हमारा सहयोग है हम कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने सरकार में आते ही एक मंत्र, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, यानी कि हर काम को सरल करना है। जितना सरल हो सकता है, सरल से सरल आसान पद्धति जो हो सकती है उसको हम करें, उसका सरलीकरण करके उसका रास्ता निकालें। वो कोई समस्या है तो उसका समाधान करें, और बड़ी बड़ी फाइलें जो चलती रहती हैं उनको नो पेंडेंसी में डाल दें, यानी कि उनका निस्तारण करें, उनको बाहर करें। उसमें जो भी उसका रिजल्ट है या जो भी उसका पैगाम आना है उसको करें। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष करके आदरणीय धसवाना जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सारे विद्वान लोगों से, देश भर के आए हुए विद्वानों से मिलने का अवसर प्रदान किया, और आप सबके वक्तव्य सुनकर निश्चित रूप से हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा, और इस दिशा में हम लोग और ज़्यादा सकारात्मक से, ज़्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए, एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।